myself Khushi Jain from JNU MSRC Jaipur. Friends, आज के इस वीडियो में we will deal about the subject of community medicine and the topic is control of yellow fever. So let's start with the topic, and control of yellow fever is utmost important. Basically its vaccination part is much more important. So I hope you will learn. I have covered in this video about the treatment part of the yellow fever mostly. So let's start with the treatment part. First of all, what we do is, for the supportive care and treatment to treat the dehydration and fever, bacterial infections can be treated with antibiotics. All kind of bacterial infections are treated with antibiotics, alright. And supportive care in case of dehydration and fever, जो कि yellow fever की वजह से हो रहा है, so आपको ये treatment देना है. And what else? Incubation period, and these are the symptoms. You can see here, yellow fever is transmitted to human from infected mosquitoes. Okay, yellow fever जो है एक disease है जो infected mosquito के bite करने की वजह से होती है. What are all the symptoms? Headache, sudden fever, body pain, yellowness of the eye and dark urine, bleeding from the nose, ear and mouth में आकर. Okay, so these are the symptoms. Basically yellow fever जो है is a disease जो कि अभी इतना स्प्रेड नहीं हो रहा है, बट दिस इज अ डिजीज विच इज मोर कॉमनली इन द एपिडेमिक एंड एंडेमिक एरियाज, और वी कैन से ट्रॉपिकल एरियाज जो है वहाँ पे एपिडेमिक की तरह काम कर रही है. सो इसे इरेडिकेट करना है. इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये सारे मिल्ड सिम्टम्स आएंगे, लेकिन अगर येलो फीवर ज़्यादा हुआ तो देयर वुड बी द येलोविनेस ऑफ द आई एंड डार्क यूरिन एंड ब्लीडिंग में आल्सो कर. इंक्यूबेशन पीरियड फॉर द मॉस्किटो इज 3 to 6 days. Okay, 3 to 6 days recognized under the international health regulation is described as incubation period. Incubation period is what the time lapse between the mosquito can infect a person and grows in its body leads to symptoms. So incubation period वो period हो गया जब एक मॉस्किटो को टाइम मिल जाएगा अपना कि वो अपनी बॉडी के अंदर जा कर के डिवाइड कर सके अपनी सेल्स को जो उसने छोड़ी है उनको, और फिर वो आगे फर्दर डिजीज कॉज कर सके. तो दिस पीरियड इज 3 to 6 days. Usually after the bite of 3 to 6 days, before the 3 to 6 days, before bite of the mosquito, the symptoms will appear after 3 to 6 days. So as you know all of this is the yellow fever basically can be transmitted by two ways. This is known as salvian cycle and this is the urban cycle. Basically, as the name suggests, urban cycle includes the main and the mosquito, that is Aedes aegypti. Okay, and salvian cycle is the most common, which occurs between the monkey and the फॉरेस्ट मॉस्किटो वेक्टर. बेसिकली व्हाट हैपन्स इज कि अगर कोई भी मॉस्किटो है वो इन्फेक्टेड है, और ये जो डिजीज़ है येलो फीवर वो लाइफ लॉन्ग है. अगर एक बार कोई पर्सन या एक बार कोई मंकी इन्फेक्ट हो जाता है तो डेट वुड बी लाइफ लॉन्ग. ओके, सो इन केस ऑफ दिस, इफ एनी काइंड ऑफ मॉस्किटो विच इज इन्फेक्टेड फ्रॉम द येलो फीवर itself can whenever bite a monkey. Okay, so this will leads to infection in monkey, and monkey will become the lifelong host for the jungle yellow fever cycle. And this monkey, whenever another mosquito which is not infected bite to this mosquito, this will also get infected. So this is the cycle which is get run in the jungles, basically between the monkeys and the mosquitoes. About the urban yellow fever cycle occurs among the Aedes aegypti. It can be two chances. Like if any kind of this mosquito, when a person or human goes to the forest area, okay, so there may be chances that person के अलावा जो monkey है उसके अलावा human को भी infection हो सकता है. And if it is not, then Aedes aegypti in case of अगर वो जो जंगल में स्प्रेड कर रहा है मॉस्किटो वो वहाँ से अर्बन एरिया की तरफ आ गया है. अर्बन एरिया के अंदर आपने इतनी गंदगी कर रखी है, इतना पोजीशन है, इतनी ऐसी कर रखा है कि जिसकी वजह से आपका जो वेक्टर है, जो मॉस्किटो है, डेट वुड डेवलप्ड. सो दिस विल लीड टू द इन्फेक्शन to the humans. So this cycle will again go simultaneously, like whenever mosquito bite to a infected person, normal mosquito, it can get infected, and then this mosquito bite to the another human which was normal. So this is all about the urban cycle. When this both cycle are the main thing in the yellow fever. So forest mosquito and Aedes aegypti, this all you should remember.
Okay, after that jungle yellow fever, for the control, what we do is the vaccination. All right, so vaccination is most important part, and 17D vaccine is the most important vaccine as per current criteria for the yellow fever prevention. बेसिकली वैक्सीनेशन है, स्टिल कहीं पार्ट में वैक्सीन जो है हम अवेलेबल नहीं करवा पाए हैं, इसीलिए येलो फीवर अभी तक स्प्रेड हो रहा है. कंटिन्यू टू बी एन अनकंट्रोलेबल डिजीज, वायरस मेंटेन इटसेल्फ इन एनिमल किंगडम. ओके, सो वायरस जो है यहाँ पे अपनी टेंडेंसी रखता है कि वो आपने देखा कि कैसे इन दोनों साइकिल्स के थ्रू अपने आपको एनिमल किंगडम के अंदर परसिस्टेंस कर रहा है. एंड वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो व्हाट वी यूज इज द 17D वैक्सीन फॉर द कंट्रोल मेजर्स. Any kind of control for the yellow fever of urban. This was about jungle yellow fever. If there is urban yellow fever, then what we do is three things: vaccination, vector control, and the surveillance. So for the vaccination, what is 17D vaccine? Again, approved for the international use. It is a live attenuated vaccine prepared from non-virulent strain 17D strain, which is grown in chick embryo and subsequently freeze and dry. The sensitivity of the lyophilized 17D vaccine to heat is a major drawback to use of this vaccine in mass campaigns and tropical countries. So for the international use, most common vaccine is the 17D. It's a live attenuated. Live attenuated, it means we are giving the viruses of live strains. Okay, and it's a non-virulent strain arises from where chick embryo. So in the person who have the allergy, we will come again with this thing. इन द पर्सन जिन्हें चिक एम्ब्रियो एज एक प्रोटीन से किसी से भी एलर्जी है, तो हम उनके अंदर ये वैक्सीन इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. ओके, सेंसिटिविटी ऑफ दिस इज लैपोफिला 17D टू हीट इज़ अ मेजर ड्रॉबैक. सो यहाँ पे ये है कि एक तो 17D वैक्सीन मोस्ट कॉमनली यूज लाइव अटेन्यूएटेड है, चिक एम्ब्रियो से डिराइव्ड होती है, एंड लैपोफिला 17D वैक्सीन है, तो इसकी सेंसिटिविटी जो है हीट से है. सो ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पे इसको ले जा पाना और स्प्रेड इसको फिर स्टोर करके रखना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. It is stored between +5 to 30 degrees Celsius, preferably below 0 degrees Celsius, until reconstituted with a sterile, cold, physiological saline diluent is provided. Reconstituted vaccine should be kept on ice away from the sunlight and discarded if no use within half an hour. So storage temperature कितना है आपका 5 to 30 degrees Celsius. इस पे preferably below 0 degrees Celsius आपको वैक्सीन को स्टोर करना है. And this is the important thing for prevention of any kind of decontamination to the vaccine or destroy of the vaccine. Reconstituted with a sterile, cold, physiological diluent solution जो है वो आपको यूज़ करना है. ओके, आफ्टर डेट वैक्सीनेशन, जब भी आप कहीं वैक्सीनेशन करते हो तो हमें क्या याद रखना है, वैक्सीनेशन में वैक्सीन कौन सी है, तो वी नो ऑलरेडी दैट इज़ द 17D वैक्सीन. आफ्टर डेट वैक्सीनेशन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली एट द इंसर्शन ऑफ डेल्टोइड इन अ सिंगल डोज. Also, route of administration and how much dose you are giving. What are its contraindication for the vaccination? These things must be in your mind when you read any kind of vaccine. So, vaccine is administered subcutaneously at the insertion of deltoid in a single dose of 0.5 ml, irrespective of the age. Immunity begins appear on 7th and last possibly for life. Okay, so कहाँ insertion कर रहे हैं हम? Subcutaneously deltoid region के अंदर of our muscles. We can say this, and dose of 0.5 ml रिगार्डिंग ऑफ एज जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें. इम्यूनिटी बिगेन्स अपीयर ऑन 7th डे. ओके, और दिस इज़ द मोस्ट गुड थिंग कि लास्ट पॉसिबली फॉर लाइफ, यानी कि इतनी जल्दी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और आपकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है वंस यू आर वैक्सीनेटेड. हायर रिस्क पीपल who should not vaccinated. So children under 9 months of age for routine immunization, pregnant women except when there is a risk of infection is high during yellow fever outbreak, people with severe allergies to egg protein with severe immunodeficiency caused by HIV, AIDS और other thymus disorder. So जो children जिनकी 9 months से कम की एज है उन्हें हम routine immunization के अंदर 17D वैक्सीन we can't give them. ओके, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर हम दे सकते हैं, लेकिन कभी वेन एवर देर इज़ अ वेरी हाई रिस्क इन द और देर इज़ अ आउटब्रेक ऑफ द डिजीज इन दैट एरिया,
until unless we will ignore it or we will try to avoid it. Okay, people with severe allergies, as I told you about the chick embryo, that the vaccine is derived from the chick embryo only. So the person who has the allergy to the egg protein, we will avoid them. In also with severe immunodeficiency disease, क्योंकि अगर हम live attenuated vaccine दे रहे हैं और these are the vaccines which are used in the person एज अ लाइव स्ट्रीम, और अगर पर्सन खुद ही इम्यूनोडिफिशिएंट है, HIV या एड्स है, तो हाउ कैन यू गिव दैम? क्योंकि उनकी बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगी. सो वी विल नॉट प्रिफर इन द पर्सन हु आर इम्यूनोडिफिशिएंट, HIV और एड्स इन्फेक्टेड. पोस्ट वैक्सीनेशन रिएक्शन, व्हाट आर द पोस्ट वैक्सीनेशन रिएक्शन? इंक्लूड द, मतलब कोई भी वैक्सीनेशन अगर आप लेते हो तो मिल्ड से पोस्ट वैक्सीनेशन रिएक्शन रहती है, जैसे कि माइल्जिया, हेडेक, लो ग्रेड फीवर में अकरिंग 2 to 5% ऑफ द वैक्सीन एंड 5 to 10 days after vaccination. So इतना रहता है. Cholera and yellow fever vaccine should be given 3 weeks or more apart so as to prevent interference. So अगर yellow fever के साथ आप cholera का वैक्सीन दे रहे हो तो आपको 3 वीक की गैप में देना चाहिए, एक साथ नहीं देना चाहिए, ताकि इन दोनों में इंटरफेरेंस ना हो. This is you can see about the mosquito, its life cycle, and what we should do as for the control and representation for the yellow fever virus. So remove standing water because the Aedes aegypti mosquito mostly grow in standing water. Reduce area where mosquito lay eggs, they hatch into the larva. Kill the adult mosquito by spraying adulticides. By educating the people about the mosquito control practices, responding to the information from health departments about cases of the disease in the community. Conduct surveillance, track mosquito populations and viruses they may be carrying. So surveillance we will deal in following slides. Kill larva, treat water that cannot be covered or removed with larvicides, prevent mosquito bites, use EPA registered insect repellent with active ingredient which is effective and safe. So these are all the things which all we can do to prevent and control yellow fever virus. After that, for the vectorial control, what is our objective is to reduce the rapidly vector population to the lowest possible level and thereby stop or reduce transmission quickly. जितना हम कर सकते हैं उतना हमें वेक्टर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है ताकि इसका ट्रांसमिशन कम हो. एंड दिस अप्रोच आल्सो हैव बीन सक्सेसफुल इन अमेरिका टू प्रिवेंट एपिडेमिक. सो या दिस इज द गुड थिंग. Aedes mosquito is a peridomestic in habits. It can be controlled by vigorous anti-adult and anti-larval measures. So we have to use insecticides and pesticides, and the most important thing is long-term policy which is based on source reduction method. So elimination of breeding places supported by health education aimed at securing community participation. हमें क्या करना है? source reduction method. What here I want to say is जितनी भी उनकी breeding places है, जैसे कि हमने देखा remove standing water, kill adult mosquito. So wherever there are the breeding places, we have to eliminate them actually, ताकि फिर से infection की chances ना हो. और this can be done by what? The health education proper in the community. Personal protection against the contact with insect is of major importance as integrated vector control. So personal protection, how can we personally protect us? By the use of repellents, mosquito nets, mosquito coils and fumigants mats. So these are all the things which we can use for the personal protections. Surveillance, basically surveillance क्या होता है कि हम किस तरीके से उस डिजीज़ को डील कर सकते हैं. प्रोग्राम ऑफ सर्वेलेंस क्लिनिकली, सीरोलॉजिकली, हिस्टोपैथोलॉजिकली और एंटोमोलॉजिकली शुड बी इंस्टॉल्ड इन कंट्रीज वेयर द डिजीज इज एंडेमिक. जहाँ पे डिजीज़ एंडेमिक है वहाँ पे हम उसका हर चीज़ से एनालिसिस करेंगे फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वायरस पॉपुलेशन और इन एनिमल्स दैट में कंट्रीब्यूट टू डिसेमिनेशन, जिसकी वजह से वायरस पॉपुलेशन और उसके जो एनिमल्स जिनकी वजह से वो स्प्रेड हो रहा है दैट कैन लीड टू डिसेमिनेशन, यानी कि हम उन्हें कंट्रोल कर सकें. एज पर current scenario, if I talk about the COVID-19, so वहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? सर्विलेंस कर रहे हैं. सर्विलेंस यानी कि उस एक कोविड जो वायरस से भी फैल रहा है उसका हर एक्सपेक्ट से हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं क्लिनिकली, सीरोलॉजिकली, हिस्टोपैथोलॉजिकली, एंटोमोलॉजिकली. सो एंटोमोलॉजिकली आई शुड से हियर इन केस ऑफ ह्यूमन वायरस जो है हम, सो वायरोलॉजी, उसकी माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं. और ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके अंदर इंक्लूड हो रही है, किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम उस वायरस के बारे में जितना हो सके उतना जान सकें एंड वी कैन इरेडिकेट इट. ओके, सो इरेडिकेट और एलिमिनेट आल्सो, दिस इज द गुड थिंग. सो program of surveillance is also important. For the surveillance of Aedes mosquito, the WHO uses an index. It's known as Aedes aegypti index. और ये जो Aedes aegypti index है
जो WHO यूज़ कर रहा है वो है कि एक्चुअली इट इज़ द परसेंटेज ऑफ हाउसेज एंड द प्रीमिसेस इन अ लिमिटेड वेल डिफाइंड एरिया शोइंग एक्चुअल ब्रीडिंग ऑफ द एडिस एजिप्टी लार्वा। जितना भी परसेंटेज ऑफ हाउसेज इन द प्रीमिसेस इन अ लिमिटेड वेल डिफाइंड एरिया शोइंग एक्चुअल ब्रीडिंग ऑफ एडिस एजिप्टी लार्वा, कि किसी भी पर्टिकुलर वेल डिफाइंड एरिया में कितना परसेंट में हाउसेस और प्रीमिसेस का जहाँ पे जो एडिस एजिप्टी का लार्वा है उसकी जो ब्रीडिंग प्लेसेस है वो है, उसको इंक्लूड कर रहा है दिस इंडेक्स विच इज नाउन एज एडिस एजिप्टी इंडेक्स। द इंडेक्स शुड नॉट बी मोर देन 1% इन टाउन्स एंड सीपोर्ट्स इन एंडेमिक एरियाज टू इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम येलो फीवर। सो दिस इज द आल्सो अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि इंडेक्स जो है 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। So this is all about the yellow fever, its treatment, its vaccination part, its cycle, about the urban and yellow fever cycle, about control of the yellow fever by vaccination, surveillance, okay, and the vector control. So yeah, thank you so much. And one thing is, nature had found the perfect place to hide the yellow fever virus. It seeded itself and grew in the blood, blooming yellow and running red. So okay, from with this I ends here. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel if you like my video, and don't forget to tap the bell icon. Thank you so much all for your support and love. Thank you.